सबसे पहले टी एरिया में लगाना है, मुझे पूरे फेस पे लगाना है। Who knows? मुझे कभी लगता है ब्लेंडर से सारा मिटो ही देती हूँ, लगता भी है कुछ। That was my basic concern. Hi guys, welcome back to my channel. Thank you so much for watching this video. After a really long time we are seeing this background, and as you know from the title, today I'm gonna be trying makeup on my face for the first time. Yes, I do not wear makeup on day-to-day or occasional purposes. Max to max I use a liner or a lip balm or a lipstick, but makeup is something I have not used. Like नहीं आता मुझे proper makeup करना, and I think it'll be a fun video if I do makeup on my face. So yeah, first thing first, I think I should tie my hair up in a bun. So yeah, so I feel makeup is an art and I failed in drawing in school, so that says a lot. मैंने अपनी कम से कम भी 10 से 12 फ्रेंड्स को मैसेज किया है ये वीडियो बनाने से पहले, लाइक व्हाट आर दी स्टेप्स, हाउ डू वी डू सिंपल नाइस डे टू डे मेकअप, एंड दे ऑल हैव सेंट मी really sweet responses. Like all of my friends were really helpful. उन्होंने बड़ा गाइड किया मुझे, and I think we are ready to shoot a fun video. So first thing first, I have to wash my face. So I'm going to be using this cleanser. Next up, we are going to use one thing, toner. Like this is like prepping the skin. It's like preparing the canvas basically. So अगर आप अपने अगर आप अपने फेस पे मेकअप करने वाले हो, इट शुड बी लाइक रियली गुड, nourished and everything. I'm also going to use my hyaluronic acid. This alone puts a lot of glow on my face. I'm going to be using my Hydro Boost gel from Neutrogena. Okay, we are done. थोड़ा सा सूखने देंगे, थोड़ा मेरा चेहरा भी गीला लग रहा है. Also, if you're somebody who is like a noob like me, so अगर आप मेकअप करके बाहर जाने वाले हो, so आपको इसलिए ये सब करने के बाद पहले सनस्क्रीन लगानी चाहिए, उसके बाद मेकअप करना चाहिए. This is the ज्ञान by Shri Parul, my friend, who told me that yes, sunscreen before makeup. And मैंने बहुत सारे देखे भी हैं ट्यूटोरियल शायद for like makeup. Theory and practical में काफ़ी फ़र्क होता है. So today we are gonna do the practical. Also, I think I have a very unhealthy relationship with makeup since from the start, because मुझे बहुत ज़्यादा acne का problem रहा है शुरू से ही. So you know, I have a lot of issues, and I think मेरा prime concern makeup use ना करने का ये था. Like it took me a lot of time to be comfortable in my skin, that yes, my skin is acne prone and sensitive. It is going to be red. It is going to be like I will have bumps all over my face, and I will never have like a glass skin, and I don't want to hide it with makeup. I don't want to feel the compulsion that without makeup I cannot step out of the house, or you know, I feel insecure in my own skin. So it took me like almost good 10 years, like from school to college to jobs, having acne and not applying something to cover it temporarily is something like I got normal with time, that it's okay. अगर acne है भी तो है यार. This is my skin, this is how I am, and I am more than my face. This is one thing which I have learned over the years. Also, just like makeup artists and you know other makeup beauty gurus, we're gonna do the lip balm thing. So yeah, as I was saying, I learned really early in when I was growing up that I might not be the prettiest person in the room, and I might not be the first person somebody would notice when they will enter the room. I don't know why, it was just like my Bollywood fantasy just got broken when I realized this thing. तो थोड़ा सा दुख हुआ मुझे. But oh, by the way, I got this really cute bag also from Amazon, from Wash Bag. They have really nice bags, and I have all my ordered makeup here. सबसे पहले I don't know, use this Fit Me Matte Poreless Normal to Oily Skin SPF 20 something. I think I have a lot of pores here and here, so उसको शायद उसका appearance कम कर देगा. ये टी एरिया में लगाना है, मुझे पूरे फेस पे लगाना है.
Who knows? तुम लोग कमेंट में बता देना. Smells like old creams I have used in the school. I don't know. Next up, we are going to use Fit Me का foundation. I have ordered in the shade 125. I hope this is shade only. Yeah, this is oil control, and that is the prime reason I got it for. I think I need a blender. So as I was growing up, and I realized that I'm not the Anjali in any Kuch Kuch Hota Hai movie. So I just started developing other aspects of my personality. Like I started working hard, really hard on being funny so that people would notice me. And we are using foundation. Okay, I think this much is enough क्योंकि मैं बहुत ही मिनिमल सा मेकअप करने की कोशिश कर रही हूँ. So I hope मैं वाइट वॉश ना कर दूँ खुद को या गलत शेड मंगा के. और ये डॉट डॉट वाली टेक्निक शायद मैंने बहुत साल पहले देखी थी. सो आई आस्क्ड अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स की स्टेप्स क्या होते हैं, एंड उन्होंने बोला कि लाइक प्राइमर एंड देन फाउंडेशन स्लैश कंसीलर. वी हैव बोथ, वी गोना यूज बोथ, बट पहले फाउंडेशन. सो और अभी मैंने हाई नेक पहना हुआ है तो इसलिए आई एम नॉट यूजिंग ऑन द नेक. बट अ प्रो टिप गाइज, यू शुड नेवर फॉरगेट द नेक व्हाइल यू आर डूइंग द मेकअप. क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि लड़के बहुत नोटिस करते हैं कि चेहरे में और गर्दन में कितना डिफरेंस है. लॉट ऑफ लसन मेक दिस वर्क. मैंने मतलब पहले ना आई हैव यूज्ड फाउंडेशंस एक दो बार. आई थिंक अभी रिसेंटली शादी शुदी में मैं गई थी तो मैंने एक दो बार फाउंडेशन यूज़ किया, बट एकदम ऐसे वाओ फैक्टर टाइप कुछ लगा नहीं मुझे. मुझे कभी लगता है मैं ब्लेंडर से सारा मिटो ही देती हूँ. लगता भी है कुछ. लड़कों का सही है, व्हेन दे गेट एक्ने दे ऑल्सो गेट बियर्ड, तो इवन आउट हो जाता है, पता ही नहीं चलता. ऑल्सो आई फील लाइक लोग कुछ ज़्यादा ही ट्रोल करते हैं मेकअप वगैरह के लिए, बट आई फील इट्स अ स्किल यार. अच्छी चीज़ है, प्रेजेंटेबल लगते हो आप काफ़ी. लाइक मुझे तो काफ़ी फोमो हो जाता है जब मैं शादी शुदी में जाती हूँ एंड आई सी लाइक पीपल आर लाइक सो मच रेडी एंड एवरीथिंग, एंड मैं बस मुँह धो के चली जाती हूँ. हाँ मतलब कभी कभी तो आई ऑल्सो पुट एफर्ट टू गेट रेडी. आई होप मैंने वाइट वॉश नहीं किया है खुद को. दैट वॉज माई बेसिक कंसर्न व्हेन आई वाज ऑर्डरिंग ऑल दीज थिंग्स कि मैं अपने शेड से ऊपर या नीचे ना मंगा लूँ कहीं कुछ भी. नेक्स्ट अप वी हैव दिस कंसीलर. दिस इज फॉर डार्क सर्कल्स, एंड एज यू ऑल नो आई एम वर्किंग इन द नाइट शिफ्ट दीज डेज, तो डार्क सर्कल्स तो इनएविटेबल है. क्या है? 3 days later. अरे क्या हो रहा है ये? Oh yes, अब निकला शायद थोड़ा. Yes. That's what she said. You have to apply it on the areas जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत है हमें. जहाँ पे मुझे थोड़े ज़्यादा एक्ने मार्क्स और रेडनेस है मैं वहाँ पे यूज़ कर रही हूँ. और अंडर आइज बिकॉज ठीक ही लग रहा है वैसे. ऑल्सो मुझे ना मेकअप हमेशा ड्राइंग जैसा लगता है बचपन से. इट्स लाइक समथिंग आई एम नॉट गुड एट. मैं स्केल से भी सीधी लाइन नहीं खींच पाती हूँ गाइस. आई एम दैट बैड. तो इसलिए भी मुझे थोड़ा सा ना मेकअप से हेजिटेशन रहा है हमेशा से कि लाइक मैं कर भी पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी. बट देन आई वाज लाइक फक इट यार, ट्राई नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा. तो अभी हम ट्राई कर रहे हैं. दिस इज़ आवर ट्रायल. और मैंने एक सबसे बड़ी गलती कर दी कि मैंने ना वो नहीं मंगाया आईब्रो पेंसिल. या दैट इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि फाउंडेशन से शायद आपकी ब्रोज थोड़ी सी मल्टी कलर हो जाएंगी. बस ये डेली तो मैं मुश्किल से ही कर पाऊँगी मुझे ऐसा लग रहा है. हाँ डेली तो शायद ही करूँ मैं, बट हाँ कभी कभी लाइक इन फंक्शंस एंड स्टफ. एक तो ठंड इतनी है यहाँ बैठ के शूट करने में काफ़ी फट रही है मेरी अभी. ओह ओके. वी ऑल्सो हैव, ऐसा लग रहा है मैंने मेबेलिन की ही सारी चीज़ें मंगा ली हैं अमेजोन से. सो मैंने लिया है फिट मी व्हाट इज दिस, फिट मी पाउडर.
उसके बाद आई जस्ट वॉन्ट टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ फन, सो मैंने ये मार्स का पैलेट ऑर्डर कर दिया फॉर नथिंग, ऐसे ही मजाक मजाक में, इतना मेकअप तो मैं करती भी नहीं है. आई रियली लाइक कि ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल था और सही शेड्स लग रहे थे मुझे इसमें. आई थिंक दिस इज़ फॉर ₹225 एंड द काइंड ऑफ शेड्स आई वॉज गेटिंग वो मेबेलिन वाले में मुझे 700-800 रुपये में मिलता. सो मैंने जस्ट टू मेक दिस like an official makeup video sort of a thing, I just ordered this one. खुदा कहाँ से आई है? So I think I am gonna take a little bit of this color. हाथों का ही यूज़ करूँगी मैं क्योंकि मुझे ब्रश तो घंटा नहीं आता है चलाने. Okay. Can you see a difference? I don't know how much visible it is, but I think कुछ तो pigmentation and color मैंने add किया है. Also, I'm gonna use this chunky one. Oh, nice. Fancy. I hope बुरा नहीं लग रहा है ये. मुझे तो नहीं लग रहा है. तो I've ordered this one. This one has like really neutral palettes and थोड़ा सा shimmer भी है इसमें and black shade भी है for like smoky eyes. So I think ये वाला palette इस range में was really good. इसमें brush भी है जो मैं use कर सकती थी, but मैंने नहीं किया. मुझसे मत पूछना क्यों. मुझे लगा मैं हाथ से ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ. That's what she said. Now it's blush time. मेरा ना फेस हमेशा से पिंपल्स की वजह से वैसे काफ़ी रेड रहता था, तो मुझे ब्लश की कभी ज़रूरत इतनी लगी नहीं. बट I've just ordered one for this beautiful video. ये मैंने चांदनी से पूछ के ऑर्डर किया है. चांदनी is my office mate and she was using the similar one, so I've used this one. Like I've ordered the similar one. I think थोड़ा सा नोज़ पे लगा लेते हैं. सर्दी का मौसम है एंड आजकल ट्रेंड में भी है शायद. आई होप मैं जोकर टाइप नहीं लग रही हूँ, बट ठीक है. दिस इज़ दूर से तो ठीक लग रही है, नॉट बैड. इससे ज़्यादा लाल नहीं करेंगे. एंड आई थिंक वी पिक अप ऑन आवर सेल्स अ लॉट. लाइक ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो शायद दूसरा बंदा नोटिस कर भी नहीं रहा होता. इट्स जस्ट इन आवर हेड एंड वी जस्ट एंड अप मेकिंग आवर सेल्फ फील more and more inferior. And just like this mascara, nobody is noticing that, but we are still going to use it. And I hope oh माँ की आँख inner corner पे भी use कर लूँ मैं ज़रा. Oh fuck, this face is funny face. ठीक है यार. Which one is this? This is Maybelline waterproof colossal काजल. I think ये मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था. ये मैंने ऑर्डर नहीं किया अभी. I find like oh माँ यार ये वाली आँख इतनी अच्छी और ये ऐसी क्यों लग रही है. बट अच्छी लग रही है मेरी आँखें. दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग. ओके. ओ शिट, मैंने लाइनर नहीं लगाया. लाइनर मैं लगा भी नहीं पाऊंगी. लाइक लाइनर इज़ लाइक दिस टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज विच नेवर गेट अलॉन्ग. लाइक दे आर नेवर सेम. अनदर मेजर कॉन्सेप्ट विच आई फील पीपल थिंक कि लड़कियाँ लड़कों के लिए मेकअप करती हैं. दिस इज़ नॉट व्हाट आई फील. लड़कियाँ मेकअप करती हैं लड़कियों के लिए, सो दैट कोई रैंडम लड़की उनको कॉम्प्लीमेंट करेगी. ओ यू नो योर मेकअप इज़ लुकिंग नाइस और योर लिप शेड इज़ नाइस और फलान ढकान व्हाटएवर. मैंने ये ब्रश भी ऑर्डर किया था जो मैंने किसी चीज़ में यूज़ किया नहीं है, बट सच अ नाइस ब्रश. दिस इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी. सो आई थिंक दिस इज़ बाय फार आवर फाइनल प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ मेकअप. इट्स नॉट बैड. ओह मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई. पूरा मेकअप एक तरफ एंड लिपस्टिक एक तरफ. लाइक आप सिर्फ लिपस्टिक लगा के भी कहीं चले जाओगे, यू विल स्टिल लुक bomb. This is what I feel. And I think one girl will like own 1,000 lipsticks in her lifetime. I'm using Maybelline New York East Village Rose. ये तो मेरा फोन फोकस कर नहीं रहा होगा. I have also ordered this Wet n Wild Photo Focus Mini Matte Vaporized Defixation setting spray, but I don't think so I'm going to use it right now because then it will be like impossible for me to remove this makeup, and I probably am doing this for this video. Oh wait, थोड़ा सा ना बाल बना लेते हैं. So yeah, this is the first time I've tried my makeup on, and I will give myself 7 out of 10. Like I think it can be better, but first time के हिसाब से I'm giving 7 out of 10.
Also, all the items I mentioned in this video will be linked to my storefront on Amazon. You can go and check out, and if you want to buy any item in this video you like, you can purchase it from there. If you have that creativity in you where you just want to try different makeup looks and different kind of looks on yourself, go for it. And it's just that you are much more than makeup, and I don't think so I will do this much taam jam on daily basis, but yeah, once in a while I think I'm gonna give it a try. Now that's it for today's video. I'll hope to see you next week. See you. I really like my eyes here, to be honest, and I'll see you next week. Okay, bye.